sorry. It has at the same time to synthesize the Purusha and Prakriti idea common to Sankhya and Yoga with the Brahmavada of the current Vedanta, in which the Purusha, Deva, Ishvara, this is one of the important sentences of this chapter, Supreme Soul, God, Lord of the Upanishads, all became merged in the one all-swallowing concept of the immutable Brahman. And it has to bring out again from its overshadowing by that concept, but not with any denial of it, the yoga idea of the Lord or Ishvara, right? So lot to unpack अनमोल भाई इसमें. हाँ, I know. The exact sentence जो मैं बोलने वाला था वो आपने बोल दिया अपने मुंह से. There is a lot to unpack in this. So it has at the same time to synthesize the Purusha and Prakriti idea common to Sankhya and Yoga. इसके पहले वो कर्म और ज्ञानों को सिंथेसाइज करने की बात करें, दैट इज आई थिंक क्लियर इनफ. Understood, yeah. सांख्या इज लाइक अ पैरेलल सिस्टम जो चल रहा है. सो वी हैड मेंशन्ड द षड दर्शन, है ना. अब नाउ एट द टाइम ऑफ द गीता आई डोंट थिंक दैट द षड दर्शनस वर देयर एज सच, क्योंकि इसमें न्याय वैशेषिक वगैरह की बात नहीं होती है. द अच्छा. गीता मेनली, हाँ, सांख्य, योगा एंड वेदांता, दीज सांख्य आर तो पहले प्रॉब्ली द से थ्री है, मेन राइट? सिस्टम्स. हाँ, सांख्य तो पहले से है क्योंकि उसका रेफरेंस उपनिषद में सांख्य भी पहले है. से है, सांख्य पहले से है, उसके आइडियाज उपनिषद में है. हाँ. अगर आप एक चौथा बोलना चाहें सांख्य, योगा, वेदांता के अलावा, द फोर्थ वुड बी व्हाट इज कॉल्ड सिंपली मीमांसा और व्हाट इज कॉल्ड पूर्व मीमांसा, बेसिकली द वेदवाद, जो कर्मकांड बन गया था गीता के टाइम तक. ठीक है, तो वो अलग से मेंशन नहीं है क्योंकि वो मतलब कल्मिनेट होके वेदांत बनता है, बट दैट इज ऑल्सो द गीता इज सिंथेसाइजिंग. ओके, ये सो जो आपने इतना तक रीड किया ना अनमोल भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, पर एक क्वेश्चन है अभी. पुरुष प्रकृति सांख्य में तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा, योग में यहाँ कहाँ हाँ, क्यों ऐसा योगा बोल में रहे कहाँ हैं? से है, दैट्स व्हाट, करेक्ट. हाँ. तो नाउ नाउ लिसन, वही बात है कि मैं कैसे बोलूं उसको, बिकॉज योग का, सी व्हेन यू से सांख्य एंड यू से पुरुषा प्रकृति, यू इमीडिएटली सांख्य कार्य का, एंड द टेक्स्ट इज हैविंग दीज वर्ड्स एंड वी से करेक्ट. दैट द वर्ड सांख्य इज देयर. अब बिफोर द भगवत गीता व्हाट वाज द टेक्स्ट ऑफ योगा, ये आई डोंट नो एक्चुअली. आई मीन गीता के पहले मैं योगा शास्त्र नैरो डाउन किसको करके बोलूं, आई डोंट नो. बट मे बी जो योगा की डॉक्ट्रिन थी, इन दैट योगा डॉक्ट्रिन the idea of purusha and prakriti was there, the words were there, the concept was there. It is obviously inevitable. कोई उसमें कोई division थोड़ी ना, there is no fundamental opposition or antinomy between these systems. So these ideas, these words, they would have been part of the idea of yoga when the Gita was given. This is all I can say. Exact किस text में था? See, when you say here again, very simple, stick to the text. So when you say here yoga, ठीक है, तो योगा का जो आइडिया है एट द टाइम ऑफ द गीता, उसका क्या टेक्स्ट था कर्म योगा में. अब आप कर्म योगा वर्ड अगर आप लेके चलते हैं, इफ यू टेक कर्म योगा इज सिनोनिमस विद योगा, द वर्ड प्रकृति, द सेम धातु इज देयर. प्रकृति इज हैविंग क्री धातु, दैट सेंस ऑफ हाँ. एक्टिविटी, एंड द वर्ड कर्मा इज हैविंग द सेम धातु, क्री धातु. तो एक ओवरलैप तो वैसे ही हो गया, राइट? हाँ, पर ये हमारा स्पेकुलेशन है, वही. और नहीं, बट एजुकेटेड. ये स्पेकुलेशन, ये तो स्पेकुलेशन नहीं है, ये तो फैक्ट है कि द धातु अच्छा. इज द सेम. ओके, हाँ. the dhatu is the same. So the yoga system would have to reconcile the prakriti also, would have to justify the action also. prakriti का मतलब ही action है. That's what the word बराबर. literally means. prakriti, forward action, that is what the word literally means. या करेक्ट. forward creation, creation में भी क्री धातु है. In the English word creation also the धातु is क्री only, संस्कृत का ही धातु है, right? तो But हमको हाँ, यहाँ पर इम्प्लाइड अजम्पशन मानना पड़ेगा कि योग में इम्प्लाइड पुरुष और एजम्पशन मानना प्रकृति पड़ेगा. थे. वी अगेन सी, वही प्रॉब्लम है ना कि वी, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर, मुझे अगर पता चलेगा या कोई आइडिया आएगा तो आई विल शेयर. बट इसके पहले गीता किस योगा शास्त्र को रेफर कर रही है, दैट आई विल नॉट बी एबल टू से. या तो मे बी इफ यू रीड द सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, एंड द फोर्थ चैप्टर, जहां पे वो इमम विवस्वते योगम देर ही सेज, एंड यू स्टडी इट वेरी वेरी माइन्यूटली, देन यू मे बी एबल टू फिगर आउट कि व्हाट द योगा टीचिंग मेंट एट द टाइम ऑफ द गीता. बट बेसिकली योगा मेंट कर्म योगा, एंड कर्म योगा के अंदर
like that through that link with the etymology. नहीं ठीक है चलेगा, नहीं that's good enough, इतना Because तो the question is very genuine, but उतना बारीकी में मुझे मालूम नहीं है. And Shri Aurobindo also, as far as my reading of the book, I have had two readings, मतलब end to end. I don't remember him explaining this in this detail. Maybe it was not necessary, right? Okay. So it has at the same time to synthesize the Purusha and Prakriti idea common to Sankhya and Yoga with the Brahmavada of the current Vedanta. Current means at the time of the Gita. उस वक्त जो ब्रह्मवाद चल रहा था. Okay? Because let's remember, गीता अभी आई नहीं है, गीता अभी आ रही है. And what is the synthesis which is dominant right now? It is the Upanishads. It is still the Bolbala, the age of the Upanishads that way, and it is the हाँ Brahmavada which is ruling roost. The Gita is yet to come, and the Gita is yet to establish its idea of the Purushottama. ठीक है? One has to understand it in this way. With the Brahmavada of the current Vedanta, in which, now this is very important, the Purusha, Deva, Ishvara. Purusha के लिए he has said supreme soul. Supreme के लिए the equivalent Sanskrit word is param or paraha or para depending on the gender. But simply if you say Purusha, that also refers to the supreme soul. नहीं उसका पर यहाँ पर एस सबसे कैपिटल नहीं एंशियंट है, एग्जाम्पल है ऋग्वेद का पुरुष सूक्त. नहीं पर यहाँ पर अनमोल भाई एस कैपिटल एस नहीं है तो कैपिटल है, लेकिन सुप्रीम के लिए जो संस्कृत वर्ड है परह, वो तो नहीं लगा ना पुरुषा के नहीं पहले. नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एस कैपिटल नहीं है, एस कैपिटल होता तो पर लगता, पर यहाँ एस को सोल पे कैपिटल रख रखा है उन्होंने. हाँ वो ठीक है धवल भाई, उसमें कैपिटल स्मॉल का कोई वो नहीं है. हाँ, वो एस को कैपिटल इसीलिए रखा है, ये दिखाने के लिए कि वो सुप्रीम सोल है. करेक्ट, दैट इज करेक्ट. ठीक है. व्हेन ही वांट्स टू डू दिस ही विल कैपिटलाइज लाइक दिस. ठीक है. हाँ वो नोइंग श्री अरबिंदो, दैट्स ऑल. हाँ या एंड द एग्जांपल ऑफ दैट इज जो पुरुष सूक्ता है. सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात. सो इट डजंट से सहस्र शीर्षा परम पुरुषः. उसमें परम वर्ड आया क्या? नहीं, वो इम्प्लाइड है. When you are talking of the Purusha, when you are simply saying Purusha, at times you have to understand that what is meant by the word Purusha is the supreme. Now, an example. There is a one-page essay of Sri Aurobindo called Man. Man, I think, is the title of that essay. It is in या Essays Divine and Human, Volume 12. So, therein he says that the Sanskrit word for man, and man includes woman, it means mankind, and the Sanskrit word for God, it is the same, Purusha. And this एज is इफ टू not a लेज अ स्ट्रेस. as if to show that basically, the aim of man is to become that, or man is basically that Purusha, but in a human form. It's a very, very powerful thing when you read it. The But it Shastras gives a lot of use, clarity, can I basically. read? Can I read? The Shastras use the same word for man and the one divine and universal being, Purusha, as if to lay stress upon oneness Yes. of humanity with God. Yes. Yes. इतना काफी है मेरे ख्याल है. बाकी आप सब उसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा ग्रुप पे, हाँ जी हाँ जी. है ना? एक सेकंड. पुरुषा देव ईश्वरा. देव के लिए द वर्ड ही हैज यूज्ड इज गॉड. ईश्वरा के लिए द इंग्लिश इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लॉर्ड of the Upanishads. So these words, they are there in the Upanishads. Like the Isha Upanishad, it doesn't begin with the word Ishvara, but usi ka jo shorter form hai Ish. Isha Vasyam Idam Sarvam. Okay. Purusha word, several times you find in the Kathopanishad. Verse abhi right now not coming to mind, but it is there. Deva. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा. ये एक श्वेताश्वतर उपनिषद में देयर इज अ वर्स. इट इज वर्थ मेमोराइजिंग दिस वर्स बिकॉज इट्स अ वेरी कंप्लीट वर्स बाय इटसेल्फ. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च. So the word Deva comes there. So all these three words, Purusha, Ishvara, Deva, they are there in the Upanishads. बहुत important है because हाँ. अनमोल भाई, व्हाट्स द ट्रांसलेशन ऑफ दिस देवा? आपने अभी एक God, वर्ड्स जो God. संस्कृत में बोली. नो हाँ. व्हाट You वाज want द the translation? ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स? Eko Devah Sarvabhuteshu Guda. I will have to show the verse then. 1 minute.
Yeah. Can you see it? योगेश भाई? Yeah, I can see it. एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च. ओके, वन बाय वर्ड है बेसिकली. दिस ट्रांसलेशन, ये कौन सा चैप्टर है इसका? षष्ठोध्याय. हाँ हाँ. सो दिस ट्रांसलेशन इज बाय श्री अरबिंदो. द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर्स ऑफ दिस हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय श्री अरबिंदो. श्वेताश्वतर उपनिषद. वन गॉड, एको देवः, हु अलोन इज एको देवः. तो गॉड के लिए द संस्कृत वर्ड इज देव. वन गॉड हु अलोन इज, एंड ही लर्केथ हिडन इन एवरी क्रीचर. सर्वभूतेषु गूढ़. गूढ़ मतलब उसके अंदर छुपा हुआ है. लर्केथ प्रोबेबली. ठीक है. फॉर ही परवेडेथ एंड इज द इनमोस्ट सेल्फ ऑफ ऑल बींग्स. सर्वव्यापी, pervadeth, sarvabhutantaratma. He is the inmost self of all beings. He presideth over all work. Karmadhyakshah. This really is a worth memorizing verse. अगर उपनिषद से एक वर्ष याद करना हो तो ये वाला कर सकते हैं. सर्व कर्माध्यक्षः, he presideth over all work and is the home of all living things. सर्वभूत अधिवासः. वासा वर्ड आ गया ना लिविंग के लिए. Then he is the mighty witness, Sakshi, who relateth thought with thought. ये चेता का ट्रांसलेशन है. दैट कॉन्शियसनेस का एलिमेंट थॉट से कनेक्ट करके. साक्षी चेता केवलो. एंड अगेन ही इज द एब्सोल्यूट. निर्गुणश्च, in whom mood is not nor any attribute. Okay. Beautiful. Thanks. Welcome. Yeah. So, in which the Purusha Deva Ishvara, Supreme Soul, God, Lord of the Upanishads, all became merged in the one all-swallowing concept of the immutable Brahman, जिसको गीता बोलती है अक्षर पुरुष in its terminology. Yeah. ये जो यहाँ पे फ्रेज है, all swallowing concept of the immutable Brahman. Because of this, the idea of Ishvara, etc., they got suppressed, and immutability. So that spiritual pragmatism of the Vedic times was lost, and what came into prominence was this immutable Brahman. That is why Arjuna says in the beginning, वो okay, भिक्षा का भी अन्न लेकर के अगर मैं ज्यादा सुखी हो जाऊं. Why is he as a prince and all that, warrior? Why is he saying such things? Because this idea of sannyasa, living by alms and all that, it had already crept into some extent, it seems like that. Okay. And this immutable Brahman वगैरह का सारा. ठीक है. And it has to bring out again, very important, bring out again from its overshadowing by that concept. Which concept? Immutable Brahman ka. This is what is called Brahmavada of the Upanishads. Basically, one can say Upanishads is synonymous with Brahmavada. It has to bring out again from its overshadowing by that concept, ध्यान दीजिए, but not with any denial of it. So you should not underestimate the importance of the immutable Brahman also, but you have to put it in its place. And the most strong language in which, strong or rather clear language in which the Gita does it is in the 14th chapter, in my understanding. If it improves, I'll share further. 14th chapter, last verse. Brahmano hi pratisthaham. Very beautiful and powerful verse. Brahmano hi pratisthaham amritasya vyayasya cha shashvatasya cha dharmasya sukhasya ikantikasya cha. This is the verse. Basically, wherein he says that I am the foundation of Brahman. I am the foundation of Brahman. Now, naturally, that which is the foundation of Brahman will be superior to the Brahman. No? It's obvious. Yeah. Brahmano hi pratisthaham amritasya vyayasya cha shashvatasya cha dharmasya sukhasya ikantikasya cha. It's 14 all point? Shashti ekvachana. 14 point कौन सा था? 27.
27. I, the Purushottama, am the foundation of the silent Brahman and of immortality and imperishable spiritual existence and of the eternal dharma and of an utter bliss of happiness. हाँ, मतलब पुरुषोत्तम है इसके बाद, इसलिए पुरुषोत्तम योग बाद में, That's right. पुरुषोत्तम बाद में इंट्रोड्यूस होता Exactly. है. That's why this is ओके, the next chapter. ओके, गॉट The इट. Gita, now it has basically started introducing and it is going to tell in its most free way about the supremacy of the Purushottama. तो उसको लिंक करने के लिए that is why this 14th chapter ends with this words, and वो लिंक विंक तो ठीक है, that is the textual linkage part, but as far as clarity of concept is concerned, here ये जो पहले चार words है, ब्रह्मणः, ब्रह्मणः षष्ठी एक वचन, क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिव केस, ठीक है, ब्रह्मण, ब्रह्मणो बन गया संधि में, ही इंडीड प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, आई द पुरुषोत्तमा एम द फाउंडेशन ऑफ द साइलेंट ब्रह्मन. There the adjective used is immutable. Basically it means the same thing. Okay, basically it means the same. So अनमोल भाई, in other words it would mean that कि ये जो पुरुष, देव और ईश्वर जो शब्द यूज किए हुए हैं, though this is representing silent mind or अक्षर पुरुष, it still is representing the above, the upper half, परार्ध. But the परात्पर परा, वो जो वर्ड आया था वहां पर, it is now taking us there, right? If we were, I were to interpret it. नहीं, आप तो मिक्स मत उस करिए एंगल थोड़ा से सा. देखे तो उस एंगल से देखे नहीं. नहीं, धवल भाई, प्लीज वेट. हाँ, All he's saying is हाँ, that these three words, हाँ. Purusha, Deva, Ishvara, are also there in the Upanishads along with the word Brahman. ठीक है? And the word Ishvara can never mean Akshara Purusha. The हाँ, word मैं वही Deva, सवाल था मेरा. हाँ, हाँ. the word Deva can never mean Akshara Purusha unless you do text twisting. आप unnecessary superimposition करें आइडियाज का, जबरदस्ती प्रूव करें तो बात अलग है. Some commentators might have done it later on. ठीक है? But as such, the word Ishvara cannot be limited to mean just the Akshara Purusha or the immutable Brahman. Okay? Yeah, thanks for that clarity. क्योंकि अनमोल वो भाई, मेरे माइंड में वही नेक्स्ट क्वेश्चन था. Exactly. Anjit, Yogesh yeah, ji, बोलिए. Anmol bhai, this verse that you put up, the 14th chapter verse, which explains the Purushottama saying that Brahman is an I integral am the part of foundation it. of Brahman. Correct. The Purusha. But here, if you see the reference where we started, it has three terms. It also has a term before Ishwar, it has Deva. The fact that Yeah. he's saying that all of these three are encompassing in that one, and this term Deva, and the fact that Deva would also be part of this, is there a reference for this as well? That's what I'm saying. So when he's saying Purusha, Deva, Ishvara, he is referring to the instances of the occurrences of these three words in the Upanishads. That is why I gave the example of that shloka from the Shvetashvatara Upanishad, Eko Devah. ठीक है? In the Gita, Deva comes, I think, standalone रूप में भी आता है, but to my memory right now, Deva Deva रूप में तो certainly आता है, where it absolutely clarifies कि he, what is speaking in the Gita is the God of gods. Clear? Okay. Similarly, for the word Ishvara, example देने के लिए I refer to the first verse of the Isha Upanishad. ईशा वास्यम इदम सर्वम. अब बहुत ज्यादा निटपिकिंग करें तो कहेंगे कि वहां तो ईशा है, ये केवल ईश्वर है, बट वहां पे ईश का मतलब लॉर्ड ही है, वो वरा Correct. उसमें या नहीं लगाया. तो पुरुषा फिर का यहाँ पर ये, सॉरी, यहाँ पर फिर ये क्यों बोल रहे ऑल स्वॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल ब्रह्मन? वही तो बता रहा हूं मैं आपको. हाँ. ये चारों वर्ड्स उपनिषद में एग्जिस्ट करते हैं, चारों कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, बट इन द ब्रह्मवाद ऑफ द उपनिषद्स, या बेसिकली मतलब उपनिषद्स की जो टेक्स्ट है उसका जो निष्कर्ष निकला, बेसिकली जो उसकी इंटरप्रिटेशन बनी, इट बिकेम द ब्रह्मवाद. इट डिड नॉट बिकम पुरुषवाद, इट डिड नॉट बिकम देववाद, इट डिड नॉट बिकम ईश्वरवाद. व्हाई नॉट? ओके, गॉट इट नाउ? गॉट इट. अगर चारों वर्ड्स हैं तो चारों में से किसी की भी सुप्रीमेसी हो सकती थी ना. हाँ,
पुरुषवाद क्यों नहीं बना? वाई इज वेदांता टीचिंग नॉट कॉल्ड पुरुषवाद और देववाद और ईश्वरवाद? वाई इज इट कॉल्ड ब्रह्मवाद? बिकॉज द वर्ड ब्रह्मन डोमिनेट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्यूटेबल ब्रह्मन डोमिनेट्स, दैट इज वाई। ये मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाँ, ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मतलब ये हो कि ये शब्दों का पतन हो गया बेसिकली। पतन हो गया। दे फेल फ्रॉम देयर प्राइड ऑफ प्लेस। आई थिंक दिस ऑल्सो हाँ, कम्स देयर, दिस फ्रेज ऑल्सो वेरी ह्यूमरस फ्रेज कम्स देयर, प्राइड ऑफ प्लेस, दे फेल फ्रॉम देयर प्राइड ऑफ प्लेस। I think अच्छा। maybe in the next paragraph it is there. I'm So just Anmol searching. bhai, Yes, sir. you always talked about the three, it was Brahman and Yeah, yeah, Maya, yeah. then it was Exactly. Purush and Prakriti, and Exactly. then it was Ishwar and Shakti, right? Exactly. Yes, sir. So, and This is a the chapter reason I'm title a of bit Life Divine. huh? This is there in a chapter title of Life Divine. That is the Right, chapter right. title Brahman Maya Purusha Prakriti Ishvara Shakti. That is where I learnt it first. Correct. So here, when he's putting all the three terms and saying that they come in an all-swallowing concept of the immutable Brahman, right? So the Purusha, Basically the the part, silence wala, that static divine wala jo idea hai, ah, immutable wala, that tended to predominate, and that leads to giving more importance to jnana, to knowledge, and the karma side gets suppressed. That is all that he's saying. right. So the only reason I picked out this word because these three words of Brahman, Purusha, Ishvara, all of them being different poises is something that you've bought out many times, and therefore it's easy to say why they would all come together as an all-swallowing concept of the immutable Brahman. This I get. The only reason I picked up the word Deva because that was not something that you'd referred in the past, but now I Yeah, understand you you're understood, huh? referring to the three terms of the Upanishads, Upanishad. and therefore These three therefore terms the as they parallel. occur in the Upanishads. Got it. Got it? Yeah, Okay. thanks. No problem. Uh, So Anmol, that means yeah. when Gita kiya, tab Purushottama became the Main even word. Purushottama supreme, became the dominant word dominant. after the Gita. Okay. Yeah. So I was just looking for an example of the occurrence of the word Purusha also in the Upanishads, and I found Mundak Upanishad, verse number 2.1.2. I am just, अभी कितना time हो गया? 8:47. Okay, I'll just show it for the sake of completeness here. ये क्या हुआ? Major Upanishads. 1 minute. The formatting of the site has changed. 1 minute. 1 minute. 2 point. Mundak is fourth. Point 1.2. Second Mundak. 1 second. Point 1.2. Yeah, this was the Divyo Hyamurtaha Purushaha sa Bahyabhyantaro Hyajah Apramano Hyamanaha Shubhro Hyaksharat Paratah Parah. हाँ, कठोपनिषद में भी था पुरुषः अक्षरात् परतः परः, बट एनीवे ये वाला मिल गया है. सो हियर दिस वर्ड पुरुष, दिस इज एन इंस्टेंस, ये मुंडा का उपनिषद में है. या लाइक दैट. सो व्हाट इज द ट्रांसलेशन? ही द डिवाइन, द फॉर्मलेस स्पिरिट, even he is the outward and the inward, and he the unborn, ajah, he is beyond life, beyond mind, luminous, supreme, beyond the immutable. Yeah, paratah parah. Aksharat paratah parah. Exactly. Okay, it is beyond the akshara. So this idea is there, but somehow it is that word Brahman which tended to dominate, and basically more than the word, the concept of the immutable Brahman. Okay, Akshara Brahma bhi keh sakte hain if we translate immutable as Akshara. Yeah. It has, अब इतना क्लियर हो गया यहां तक जो हमने पढ़ा है from the beginning of this paragraph, we have read till here. Yeah. Now it has to its own luminous thought to add. The crown of its synthetic system, the doctrine of the पुरुषोत्तम. अब आया, शुरू से लेकर के अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं इस ऑन द गीता में, नाउ अ सर्टेन माइलस्टोन हैज बीन रीच्ड इन द बुक. दैट वे
द फर्स्ट टाइम श्री अरबिंदो सेज हियर, इसके पहले कभी नहीं बोला इस तरह से, द डॉक्ट्रीन ऑफ द पुरुषोत्तमा, डॉक्ट्रीन मतलब टीचिंग, एंड ऑफ द ट्रिपल पुरुष, इट कम्स इन द 15th चैप्टर, क्षर अक्षर उत्तम, फॉर विच, फॉर विच मतलब किसके लिए, पुरुषोत्तम के लिए। अगेन जो हमने यहाँ पे वर्स देखा था उसमें भी ये इंप्लाइड है, अक्षरात परतः परः, यहाँ पे साफ साफ लिखा है सुप्रीम बियॉन्ड द इम्यूटेबल। नाउ दिस इज उपनिषद, दिस इज नॉट गीता, तो उसके अंदर वो आइडिया इंप्लाइड है, बट इट हैज नॉट बीन ब्रॉट आउट क्लियरली। वो लास्ट चैप्टर में भी था ये सेम, सांख्य एंड योग में सेम रेफरेंस की, फुटनोट में था, फुटनोट में था एग्जैक्टली। करेक्ट, या सो दो द आइडिया इज देयर, आइडिया किसका, कौन सा आइडिया, पुरुषोत्तम वाला आइडिया, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम पुरुषा और सुप्रीम पर्सन। No precise and indisputable authority can be easily found in the Upanishads, and which seems indeed at first sight to be in contradiction with that text of the Shruti where only two Purushas are recognized. वही द्वासुपर्णा वाला जो है, द्वासुपर्णा वाला एग्जैक्टली, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, राइट। तो इट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट, बिकॉज वो क्लियरली बोलता है द्वासुपर्णा, एक और में वो बोलता है अजा हेका, प्रकृति के लिए जब बोलता है तो बोलता है एका, अजा, देर इज वन अनबॉर्न, दैट इज द प्रकृति, एंड देन देर आर टू विच इज द पुरुषा। बट वेन एवर इट स्पीक्स ऑफ द पुरुषा ऐसे एन्यूमरेट करके क्लियरली इट सेज टू, थ्री नहीं बोलता है, दैट्स ऑल ही इज सेइंग हियर, क्लियर, which seems indeed at first sight to be in contradiction with that text of the Shruti where only two Purushas are recognized. Moreover, in synthesizing works and knowledge, it has to take account not only of the opposition of Yoga and Sankhya, but of the opposition of works to knowledge in Vedanta itself. अब इसके लिए ना एग्जैक्ट मेरे को वर्स वगैरह आई डोंट नो, नहीं पर अनमोल भाई ये तो क्लियर है क्योंकि कर्मकांड और ज्ञान कांड हमने देखा था लास्ट टाइम। बट वो कर्मकांड को हम वेदांत नहीं बोलते ना, हाँ नहीं कर्मकांड को हम तो वेदांत नहीं बोलते ना, कर्मकांड को हम वेद बोलते हैं। हाँ 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 For the satisfaction of this, हाँ one has to be able to find some verse in, like Isha does not do it, because Isha कर्म की बात करती है, विद्या की बात करती है, and it perfectly reconciles everything. So in the Isha this opposition is not there, but it might be there. I think it might be there in the Mundaka. Again verse ढूंढना पड़ेगा, but basically one has to find a verse wherein this opposition of works to knowledge is there in the Vedanta. या अगर conceptually समझें तो भाई कि वो वेदांत के अंदर भी, because you know, okay, आप इसको ऐसे समझ लो, चलो very simply, in the Isha Upanishad which is a Vedantic text, काम करने को बोला है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, clearly the diktat is there, right? हाँ but आप उसके बाकी जो 12 मेन उपनिषद, जो बाकी 11 बचते हैं, उसको आप ऐसे देखें, जहां पे भी वो इम्यूटेबल ब्रह्मन की बात हो रही है और इतना स्ट्रांगली हो रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, मुंडक उपनिषद वर्स नंबर 6, नहीं, व्हाट डज इट से, व्हेन इट स्पीक्स ऑफ द अपराविद्या एंड द पराविद्या, अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, and then the higher knowledge by which is known the immutable. Why did it say aksharam adhigamyate? Why did it not say उत्तमम अधिगम्यते और पुरुषोत्तमम अधिगम्यते? अगर पुरुषोत्तमम अधिगम्यते बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, करेक्ट और नॉट? तो दैट, हाँ, थैंकफुली पता नहीं कहां से दिमाग में आ गया, अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, मुंडक उपनिषद वर्स नंबर 6, मैं भी खोल के दिखा देता हूं, आपको ये साइट का एडिटिंग का हक है ना, तो हाँ, नहीं इसका नहीं है, गीता वाले का है। हाँ वही गीता वाले का है ना, तो व्हाई डोंट यू एनोटेट विद द एडिशनल लाइंस हियर? वो उतना फ्री नहीं है धवल भाई, बेसिक राइट्स है। अच्छा अच्छा, वो बेसिक सजेस्ट तो कर दीजिए क्योंकि ये बहुत, ये सब बाद में बात करेंगे अभी। हाँ ठीक हाँ है, ये सूक्ष्म है, ये मैं वेदांता को वेदा पकड़ के आगे चल गया, यू नो दैट्स वाज माय मिस्टेक, राइट। नहीं, एवरीथिंग कैन नॉट बी, मतलब ठीक है, एनीवे, 1 मिनट, दिस इज देयर इन वर्स नंबर 6 ऑफ द मुंडका।
Mundaka Upanishad. Yeah. So this is the verse. Yeah. Verse number 5, sorry. That's why agla wala arth. I'm sorry, verse number 5 hai. This part, second part. Atha parayaya tadaksharam adhigamyate. Basically, this verse is telling about the lower knowledge, lower vidya, and the higher knowledge, higher vidya, parayaya. ठीक है? Atha, atha का मतलब and then, para, the higher, yaya, by which. अब उस हायर नॉलेज के द्वारा क्या जाना जा रहा है? तद अक्षरम अधिगम्यते. Got it. Yeah. And then it's a poor example. I'm sorry for my not knowing the verse and all. सॉरी क्या, हमको तो इतना भी नहीं मालूम. सॉरी हमको. नहीं, आप it's a poor example, but it's not very poor also. It's serving the purpose to some extent. ठीक है? And then the higher by which is known the immutable. तो ईशा बात कर रही है कर्म की, मुंडका बात कर रहा है एक तरह से ज्ञान की, इम्यूटेबल की प्राप्ति की. फाइन. ओके, नेक्स्ट. सो हाँ, of the opposition of works to knowledge in Vedanta itself, where the connotation of the two words would be karma and jnana, and therefore their point of conflict is not quite the same as the point of the Sankhya Yoga opposition. Now, इसके लिए मतलब you really need to have a certain text in mind. बिना उसके you cannot understand this. बहुत बारीक है ये वाला. ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, बहुत बारीक है. Sankhya Yoga opposition is simply this, that Sankhya says that Purusha and Prakriti are like parallel lines, they can never meet. So when the Purusha realizes that it is the Purusha, when it gives up its identification with the Prakriti, it knows itself as that ever silent Purusha or whatever, and that's it. So there is no reconciliation between the active nature and the silent this thing. Okay. In yoga, you are taught to reach the same liberated state by doing karma. But कैसे? यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः. 3.9 of the Gita. Do it for the yajna, yajnartha. Do it as an offering. अगर offering में नहीं करेंगे तो कर्म कभी कर्म योगा नहीं बने. This is the secret of karma yoga given in the Bhagavad Gita. Okay? तो और बाकी इसके लिए जो ये बोल रहे हैं, क्या बोला था यहाँ पे इन्होंने, not quite the same, two words वगैरह, you will have to find very precise text. अगर मुझे मिल जाएगा I'll share, I'll try to find certainly, but as of now I'll नहीं, not. पर अभी आपने बताया तो ये बहुत एविडेंट हो गया यहाँ पर कि it is serving but still not totally satisfactory. So yeah, but the type of reconciliation of Sankhya and Yoga is different, and the type of reconciliation in the Vedanta is different. And on top of that, it has to introduce its own abstraction of Purushottam. no, what he's and saying is reconcile. basically in the Upanishadic texts, in the Upanishads basically, when the word jnana is there and when the word karma is there, so they are opposed in a certain sense. But if you take these two concepts in Sankhya and Yoga, then they are opposed in another sense, and they are not the same. These two senses of opposition are not the same. This is what he's Correct. saying. But Correct, for that, both we need to sense, have an yeah. exact text from the Upanishads, which we don't have right now. Yeah. No, I got both senses are different. That Correct? yeah, Correct. that's very evident. Yeah. It So, is so not. Anmol, Yes. Anmol bhai, on this one, the reconciliation, because as you said, when we did the Sankhya and Yoga, it said that in Sankhya, it is the moment you become aware of the Sankhya enables you to be aware of the silent spectator and be the one who participates. If you participate and you give, you're the adhyaksh, right? You give the approval. And that is where the engagement begins with Prakriti. Whereas in the yoga, you are doing the karma as part of Prakriti, but Yes. offering it to a bigger Offering one. it. Yes, you're offering. Now you're getting a third aspect in of the Purushottama, right? Yes. Saying that the offering is to this third Yes, element. Exactly. Right? So And that is that- where you are saying and that you are and that still witness, engaging. yes, and that Yeah. witness state or silent state which is reached by Sankhya is basically a higher poise than the mutable state, but still it is not the highest,
It is that eternal silence on whose basis the eternal activity is ongoing. Right. So this is how, because the moment you bring in this dimension, you are able to reconcile the two. Because in the other one, till you did not go up to the third level, Exactly. your Sankhya was always disengaged with work. Sankhya mein there is no Purushottama. Correct. Sankhya mein there is no Purushottama. Sankhya mein there is no Akshara, Akshara, nothing. These words are introduced by the Gita. Sankhya mein simply there is Purusha and there is Prakriti. Prakriti is further broken down into those 24 principles and all that. Correct. Absolutely. Here you can reconcile that. Yeah. It is not sub. कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा, हाँ, नहीं, ये हम जो गीता में सीखते हैं that we have to offer everything. So until the Gita came in, that aspect of offering to the divine was not there at all. It was there, but it was there in an indirect way. So, like in the Vedic sacrifices, you offer only, na? You offer it to the fire, but that fire is supposed to act as that Havya Vahana, कि वो उस हव्य को जो आपने ऑफर किया है वो वाहन के रूप में उसको लेके जाएगी टुवर्ड्स द ईश्वरत. आइडिया इज देयर, ऐसा नहीं है. द आइडिया इज एज ओल्ड एज थिंकिंग माइंड बेसिकली. बट और कर्मयोगा का आइडिया भी पहले से है, बट गीता बेसिकली सिंथेसाइज कर रही है. अब कैसे बोलूं, द चैप्टर इज टाइटल्ड सांख्य योगा एंड वेदांता. इट इज जस्ट सिंथेसाइजिंग दीज थ्री सिस्टम्स, एंड wherever there is any apparent opposition or actual opposition between them, the Gita is just simply synthesizing them. The idea is already there. So in the Veda, for example, the entire universe is considered as a sacrifice to that Purusha. मुझे exact verses Veda के नहीं याद है. I have not really been able to go into that, but the idea is there. Anmol bhai, in this Isha Upanishad, there is that last verse or the second last verse which says Vidhi mein, the word Vidhi comes that you're offering it by in that sequence, right? What is that verse? Because that is an Upanishad text which talks about a sequence and a Vidhi and an offering, right? नहीं, विधि ईशा उपनिषद का तो लास्ट इज अग्ने नया सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम. विधेम है, वो विधि नहीं है, विधेम है. Vidhema. So is that talking about an offering in that verse? Yes, उसमें वो जो नमः है ना, that sense of surrender, that bowing down, that is a kind of offering only, but the idea is not, मतलब उसमें अग्नि को कर रहा है, and Agni is taken as a form of the divine like that, या Agni is taken as the divine. गीता के अंदर बार बार उसको बोला हुआ है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम. वो बार बार 12th चैप्टर में भक्ति योगा में आएगा, फिर 18th चैप्टर में आएगा. सो द आइडिया इज रीइंफोर्स्ड वेरी स्ट्रांगली इन द गीता. 3rd चैप्टर में यज्ञार्थात् कर्मणोन यत्र लोकोयम कर्म बंधनः. Basically, offer your actions to me, then the action becomes karma yoga. And it is very important to understand, if you do not offer the action, then that same karma will become a source of bondage. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः. वेरी क्लियरली 3.9. ठीक है. हाँ, जो कर्म के, जो यज्ञ के लिए नहीं किया जाए, that karma becomes a source of bondage. So one has to be very subtle about it, very careful about it in one's consciousness, very conscious basically, that whatever I am doing, here is the verse, yajnarthat karmano anyatra loko ayam karma bandhanah. Translation: by doing works other than for sacrifice, this world of men is in bondage to works. Right? Isha also, tena tyaktena bhunjita. If you do it in a spirit of tyaga, then na karma lipyate nare. But if that tyaga is not there, if that renunciation of desire is not there, then of course the karma will bind you. Then you cannot be free from the karma bandhana. Clear? Clear. Thanks. Welcome. Okay. It is not surprising at all, one may observe in passing, that with the conflict of so many philosophical schools, all founding themselves on the texts of the Veda and Upanishads. The Gita should describe the understanding as being perplexed and confused, led in different directions by the Shruti,
Shruti Vipratipanna. Now, for this, actually, the current form of the Gita, exactly when it came into being, वो क्लियर होना चाहिए. And at the time when the current form of the Gita came into being, current means, I mean, व्यासा इज लाइक 5,000 years ago. आप उसी को मान के चले हैं, आप चलो उसी को मान के चलें. सो व्हेन व्यासा वाज राइटिंग द गीता at that time, what were the philosophical schools which had founded themselves on the text of the Veda and the Upanishads, and what they were saying? This we don't really know. We know Sankhya is there, we know yoga is there, we know Vedanta, we know that Vedanta is there. These are having the base of these two syntheses. हाँ, बट इसीलिए और बोल रहे कौन से ईश्वर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स थे उस टाइम पे, आई मीन वी डोंट नो. that's why he's But the saying the idea is Gita simple should enough. Idea is simple enough. It is not basically वो कि too many texts ना, too many texts, too many interpretations, so you get lost in the words only. हाँ, आप आदमी उस पागल शब्दों हो के जाएगा. माया जाल में फंस करके रह जाते हैं. उस शब्द ब्रह्म का पर्पस था आपको माया से मुक्त करना, बट उस शब्द ब्रह्म ने उल्टा माया का काम करके आपको माया में और बांध दिया. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. Correct. Okay. The purpose of the Shabda is to take you beyond the Maya and to take you to the Brahman. But उल्टा आप उसके माया जाल में फंस गए. That's what आज की स्थिति में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ज्यादा it happens to इम्प्रूवमेंट नहीं है. everybody. Whoever will start going too much into text, that's why last time मतलब we had said कि instead of कि ये फॉलो करूं कि वो फॉलो करूं कि वो फॉलो करूं, stick to one thing जो आपका एक मेन शास्त्र है with full loyalty, devotion, etc. and stick to it. And till the time you outgrow that text, stick to it and get realization in that. वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस चीज को फॉलो करूं. राइट? Okay, it is not surprising at all, one may observe in passing, that with the conflict of so many philosophical schools, all founding themselves on the text of the Veda and Upanishads, the Gita should describe the understanding as being perplexed and confused, led in different directions by the Shruti. Shruti Vipratipanna. जो हमने सुना, श्रुति का हायर मीनिंग तो ऑब्वियसली, और रादर द रियल मीनिंग इज द इंस्पायर्ड वर्ड. ठीक है, बट जो हमने सुना, अच्छा हमने तो सुना है कि इसका ये मतलब था, नहीं नहीं हमने सुना है इसका वो मतलब था, नहीं नहीं हमने सुना है इसका वो मतलब था, ओ हमारे गुरु ये कहते हैं, तो उस चक्कर में ना यू गेट कंफ्यूज. श्रुति विप्रतिपन्ना लाइक दैट. मैं ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं ले रहा हूँ श्रुति वर्ड को. यहाँ पे श्रुति मीन्स द बेसिकली द सेक्रेड वर्ड, बेसिकली वेदा और उपनिषद, basically the sacred word, the inspired word. ठीक है, तो and essentially what he is pointing out to is कि that inner Veda, that knower within you, this phrase which comes in the brain of India also, ठीक है, that has to awaken and that eternal Veda has to be read. खुद की obey your soul, it alone has the right to govern your life, mother sentence. That can be the only shastra, it can be the only guide, nothing else can be the guide. Is basically trying to reach there. Okay, what battles are even now delivered by Indian pundits and metaphysicians over the meaning of the ancient texts and to what different conclusions they lead? Sri Aurobindo is writing this somewhere in I think early 1917. ये 8th chapter है तो yeah. Vivekananda, he was challenged in Madras by a pandit. When he said some interpretation, again the exact text I don't know, but Shankara doesn't say so. And Vivekananda replied, but I, Vivekananda, say so. अच्छा. It's very famous. It's very famous. Those who know about Vivekananda and his life, this is a very famous incident. Oh, matlab he just sank. That Pandit was left speechless and he just sank into himself. वो शक्ति निकल गई ना. That Vibhuti of Shiva, that very great Vibhuti of Shiva, who is a successor to the previous great Vibhuti. Shankaracharya is also a very great Vibhuti of Shiva, but there is a gap of 1200 years. Come on, man, in 1200 years, some progress will happen, no? Why do you want to stick rigorously only to what Shankara said in 7th century? You see? Yeah. That's why, and but I, Vivekananda, say so. वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था उस वक्त एक तरह से. So, that's what. So, what battles are even now delivered by Indian pundits and metaphysicians over the meaning of the ancient texts and to what different conclusions they lead? जो लोग ये शास्त्रार्थ वगैरह करते हैं. Yeah. The real meaning of pandit, the word pandit,
Nowadays, even English dictionaries, the word is there, and it means somebody who is an domain expert or something like that. Scholar. Yeah, scholar or domain expert or whatever. But the Gita defines the word Pandit as Samadarshi. श्लोका मुझे नंबर याद नहीं है, श्लोका याद है. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. Yeah, this is the shloka. 5.18. A Brahmin think- endowed. Sorry? Second chapter also, I think he says somewhere when he says in the beginning something Pandita. Remember that word itself. नहीं, I don't know. मुझे ये पंडित के the word in the context of the हाँ word ये पंडित, रहा verse 11 में गता सूंश्च नानु शोचन्ति शोचन्ति पंडिताः. पंडिताः. Yeah. So basic gatasunश्च, that which has passed or that which is going to pass. The panditas, they do not grieve about it. One second. Since you have Enlightened mentioned man. it, I'll open the translation. मुझे वो ब्रेक नहीं कर पा रहा मैं संस्कृत को अपने माइंड में अभी. The enlightened man does not mourn either for the living or for the dead. dead. Gatasuna, agatasunश्च, basically, yeah. Yeah, gatasun, agatasun. Gatasun means for the dead, agatasun means for the living. हाँ, गता मतलब जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं. या, थैंक यू. तो Basically, ये पंडित की एक डेफिनेशन है, बट वो वाली डेफिनेशन और भी ज्यादा वाइड है सरिता, कि पंडित इज हैविंग परफेक्ट इक्वालिटी, उसको पंडित बोलते हैं. We'll do only this one paragraph, so I'm going very slowly. I'm not even hoping to do more today. ये विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः. It's very staggering verse if you read it. What does it say? Sages see, English word sage लिया है पंडित के लिए. Sages see with an equal eye the learned and cultured Brahmin, the cow, the elephant, the dog, and the outcast. और outcast के लिए बड़ा खतरनाक वर्ड यूज किया है, श्वपाक. Literally the one who cooks a dog or who eats a dog. श्वपाक, श्व माने डॉग, पाक मतलब पचाना, कुक करना. आप इमेजिन करके देखो, आपके सड़क पे सामने एक विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण आ रहा है, और एक गाय आ रही है, और एक एलिफेंट आ रहा है, डॉग आ रहा है, और एक बिल्कुल एकदम चांडाल टाइप का आदमी आ रहा है. विल यू बी एबल टू सी देम? ये तो बिल्कुल एक ही है, समदर्शिन, कि दे आर वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. इट्स नॉट इजी. कहना आसान है. बट इसमें तो ब्राह्मण को सिर्फ कल्चर्ड का दिया, समदर्शी तो सेज को दिया नहीं है. नहीं नहीं सरिता, यहाँ पे वो नहीं है. आपका यहाँ पे है विद्या विनय संपन्न. विद्या और विनय से ये एक नेचुरल कंफ्यूजन है, अंडरस्टैंड. मैं धीरे चलता हूं. विद्या और विनय से संपन्न एक ब्राह्मण, ठीक है, आप उसको देखें, चाहे आप एक गवि को देखें, चाहे हस्तिनी को देखें, चाहे शुनि या श्वपाक, अगर आप पंडित हैं तो इन सब के लिए आप समदर्शी होंगे. क्लियर? द विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे इज गिवन एज अ इंस्टेंस, एन एग्जाम्पल. दैट वे. ये कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था जब मैंने पढ़ा था पहले. करेक्ट? या, ओके, वी गो बैक. What battles are even now delivered by Indian pundits and metaphysicians over the meaning of the ancient texts, so on. The understanding may well get disgusted and indifferent. Gantasi nirvedam. क्या प्रिसाइज मीनिंग दिया है बाबा. Gantasi nirvedam. निर मतलब अलग जाना, that's what. अलग जहाँ, अवे फ्रॉम नॉलेज, नो. मतलब निश्वास. सो निश्वास, द आउटगोइंग ब्रेथ, दूर जाना. वही निह, वो वेद के पहले जो विसर्ग है, दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ र. सो निर्वेदम, वेद से भागो, सब पढ़ाई लिखाई से दूर भागो, बुक से दूर भागो. निर्वेदम, स्क्रिप्चर से यार कौन पढ़ेगा यार, इतना दिमाग कंफ्यूज हो जाते हैं. नहीं नहीं, भागो. गंतासी, गोइंग. गंतासी निर्वेदम, लाइक रिफ्यूज टू हियर एनी मोर टेक्स्ट, न्यू और ओल्ड. श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. श्रुता मतलब जो सुन लिया है, श्रोतव्य माने जो सुनना है, दैट विच वी आर न्यू टेक्स्ट बेसिकली. एंड गो इनटू इटसेल्फ टू डिस्कवर द ट्रूथ इन द लाइट ऑफ अ डीपर एंड इनर एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस. दिस इज हैपेंस टू मतलब a lot of living souls, कि why to bother man? And anyway, ultimate knowledge will come by inner experience. नहीं, ये होता ही है, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस की वो अपने आप से अंदर से लॉजिकल आप इवोल्यूशन कर जाओगे, क्योंकि आप पागल हो जाओगे. I may add here
that Sri Aurobindo, he took the help of the of the Upanishads and the Gita. Exact sentence hai in his letter. I practiced the yoga of the Gita and meditated with the help of the Upanishads, right? But jo Veda hai, he was started getting the experiences of what is there in the Rig Veda. He did not understand what it means. He started getting visions of Vedic goddesses, Ila, Saraswati, Sarma, and many experiences he was getting, for which he was not able to find the meaning either in the Gita or the Upanishads or in the Puranas. When he read the secret of the Veda, then his experiences got confirmed. So he's a classic example of this kind of thing, where you go into yourself, या वो automatically हो गया. He was more actually a practical man that way, a practical man with a very very sattvic and metaphysical mind that way. वैसे though he says that I never studied metaphysics and he says I was never a philosopher, but वो सब उसमें नहीं जाते हो कि श्री अरविंदो के पर्सनल उसमें. Go into itself to discover the truth in the light of a deeper and inner and direct experience. बिना उसके तो that is the only touchstone, your own experience. You have to, I mean, feel that divine within you, that knowledge within you. If I may add and say Yeah, that please, कि आप यदि ये सब देखोगे, इतना सब मैं जो आप ना अंदर से बोलोगे कि ये साइड पे रखो, आई विल गो बाय माय एस्पिरेशन, yeah. ऑटोमेटिकली यू विल बी लेड बाय योर एस्पिरेशन, फिर बाद में वही करना चाहिए. मेरे को तो ऐसा लगा बाद में That पर्सनली. aspiration is called Agni in the Veda, and Agni is the leader, Purohita, placed in front. That's what the word literally means. पुरोहिता जो वर्ड है ना, अग्नि मीले पुरोहितम. सो अग्नि आगे, हिंदी का जो वर्ड आगे है वो अग्नि, वो अग जो है ना इवन अग्नि का, हाँ एग्जैक्टली हाँ वही हाँ, है, करेक्ट वही है. करेक्ट, अग्री अग्रे अग्रे अग्र, 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 अग से करेक्ट. हिंदी में आगे, पुरोहिता मतलब प्लेस्ड इन फ्रंट. वही जो दैट एस्पिरेशन, दैट फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन. इवन इट इज दैट इवन आई फ्लेम वुड, ऑफ एस्पिरेशन व्हिच लीड्स यू फॉरवर्ड. करेक्ट. नहीं अनमोल भाई, इवन आई वुड से कि जब मैं सब श्री अरविंदो का भी जो लिटरेचर इतना सारा देखता हूँ, बुक्स, तो कभी कभी लगता है ये कब हो पाएगा, ये हो नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये लाइफ टाइम में हो Okay, पाएगा नहीं हो that's पाएगा. okay, that's okay. That's, see, नहीं you नहीं, need, you don't, व्हाट हैपेंस इज that आई टेल. small book, The Mother, okay? हाँ That is why it was written मतलब very early, 1928 में it got published. And I even told last time कि it was sent even all the way to America, जो disciples अमेरिका में रहते थे, as a gift or a whatever necessary reading. So, you know, मतलब if you follow that second chapter उसका, to follow it itself is like everything. Of course, for better, and it's just a small book and it will not be sufficient after a certain time. You will seek more clarity, you will want nuanced ideas. Jnana yoga, karma yoga, even essays on the Gita will not be sufficient. Synthesis of yoga आपको पढ़नी ही पड़ेगी. आपको satisfy नहीं होगा essays on the Gita से. पर Yeah, but Anmol bhai, yeah, this beautiful thing that you said, that when a person sees a dog, an animal, a elephant, and a dog eater, yeah, and if you evolve to a state where you can see the them Brahm, all that as oneness equal. in all of them, which Yes, is what Kabir says, Dhai Akshar Prem ke samjhe so pandit hoy. I correct. think all the texts are for you to come to, it's like having an encyclopedia, but I think it's a very simple To reach that Samadarshita, oneness to which see is that within all of us. oneness. Correct. Correct. So To I, reach I that don't see it to Samadarshita. be as complicated as what you say, नहीं Dhaval bhai. नहीं I think it's very straightforward. You can get into as much complexity and as much level of detail, but No, it is a what very happens simple is, guidance. no, I understand. When you start with simple, what happens is you take it ahead. Then, as Anmol bhai said, no, ये पढ़ना पड़ेगा, ये अपने आप से अंदर चलो, let's the dive need is little felt. I deeper. am saying, at हाँ, least from my the need personal is felt, experience. exactly. The need is felt, and when you start going deep, no, you realize अरे ये किस कुएं में नहीं, उतर but रहे Dhaval हैं. bhai, I was saying in this context कि if you are, all of us feel overwhelmed. We feel so attracted towards his books and all that knowledge. हाँ, attraction के बाद overwhelming भी होती है. Yeah. So you're like, how is it possible to do justice to even one book, forget about all the rest? So हाँ that's why you keep reading what you are reading and try to follow it. But one book ना, जैसे द मदर फॉर एग्जाम्पल, ओके, और सावित्री रीडिंग, अगर उसको सावित्री को आप अपना मेन शास्त्र मानते हैं एंड रीडिंग सावित्री इज योर साधना, तो stick to that sadhana part. For that, you stick to one particular text or this thing. Or again, one may not be so rigid also. Whatever works for anybody, right? But द हाँ मदर, लेट्स से अगर आप उसको पकड़ करके उसको फॉलो करने का दृढ़ संकल्प ले लो ना,
कि मेरे को तो इस बुक में जो कुछ लिखा है आई हैव टू रियलाइज इट इन फ्लैश एंड ब्लड, देन इट विल बी इनफ, देन यू विल गेट ऑल रियलाइजेशन, यू विल गेट ऑल रियलाइजेशन, वट एवर क्लैरिफिकेशन यू नीड, देन वो अपने आप पॉइंट आउट करेगा भीतर से कि सिंथेसिस में ये पढ़ो. आई टेल यू समथिंग, example from somebody not regarded as part of integral yoga community that way. There is a person called Rajarshi Nandi. He's there on YouTube. Yeah. He's You a know what he tantric. says? You know what he Yeah. says? I have He great is respect for basically Sri a Tantra Aurobindo. practitioner, He's a but Tantra being a practitioner. Bengali or whatever, he knows very deeply about Sri Aurobindo also. Yeah, he says तो I वो भैरव revere उपासना Sri करता है. Aurobindo. नहीं वो he has admitted I revere Sri Aurobindo. Let me give the example. हाँ. So what he says is he was stuck at some point in his sadhana, okay? And he says Sri Aurobindo appeared. Matlab he doesn't describe how he saw. He felt the presence clearly, and what the presence communicated. Read this thing in the letters on yoga. वो उसने पेज वगैरह नहीं बताया, बट ही वॉज गिवन प्रिसाइज गाइडेंस कि लेटर्स ऑन योगा में ये पढ़ो. इमेजिन. And he read that letters on yoga and he got his answers. Now this is an extraordinary thing, but it all depends on how intense your sadhana is, and when the need is felt, then the divine can even intervene in this fashion. Who was the sadhak? His name is Rajarshi Nandi. I came to know him through a podcast on YouTube, but even if you go on YouTube and type Rajarshi Nandi Sri Aurobindo, you will find many videos. He talks about Sri Aurobindo quite openly. Okay, thank you. It's with one of those podcasters who जो became बहुत very सारे हैं अब तो, बहुत सारे हैं अब तो. नहीं वो The infamous first one was with Ranveer Alabadia. रणवीर अलाहाबादिया After that वो वाद के साथ भी आया है और जयपुर डायलॉग्स पे भी आया था संजय नहीं ये दीक्षित मैंने वाले. उसके साथ सुना रणवीर वाले से सुना. Same. Anyway. So basically, 9:21. Any questions, anybody? Otherwise, we close with silence. Thank you, It's simple enough, this paragraph, just that ideas, कुछ 2-3 ideas बहुत deep थे. That's why we had to go so slowly. I mean, I feel like apologizing for the, almost snail-like speed, but क्या करें? I mean, the text is so profound. I hope people are not too unhappy with the speed. Yeah. Can even go slower. It's because it's Thank you, sir. Thank you. the more important thing is we To really get absorb to the it. To experience. absorb Yeah. it. Absorb it. And this phrase here, na, all swallowing Brahman. So, यही आपके दिमाग में अगर गूंजे, it can liberate you from that. Otherwise, वो ब्रह्म के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता. ब्रह्म वो अभी भी छाया रहता है, पता है. In मतलब some of that impact is still there in the Indian mentality because of the dominance of Shankaracharya for so long. The rightful dominance, because he speaks of Advaita and all. ठीक है. But and that is why you will find कि even in the Bhakti wala scriptures, so they have to call Ram as Brahm. तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता. Those who are familiar with Ramcharitmanas, they will understand. Ram is called Brahm over there. I'm not saying that he is not Brahm, but अगर आप clearly बोले, then he is Param Brahm. You understand? So it's because of that long dominance and that all swallowingness of the concept of the immutable Brahman. Okay. Again, Sarvam Khalvidam Brahma, Chandogya says. So all this is Brahman. Ekam eva dvitiyam Brahma, Brihadaranyak says. तो सब कुछ ब्रह्म है, no doubt. But वो जो यही actually the whole sentence is this one. All swallowing concept of the immutable Brahman. इससे वो ज्ञान वगैरह का जो था वो श्रेष्ठता ऊपर आ गई. गीता में भी सर्वम कर्माखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते. The end of all karma is in knowledge. 4th chapter. I have referred to this several times now. 4.33 or something it is there. 4.33, correct. Yeah. तो उसको गीता करेक्ट करती है. It brings, आया नहीं, but I had referred to that. I'll show it actually. Pride of place. It's a very funny, this thing. Pride of place. ये रहा. Brahman as the one, आगे वाले paragraphs में है. Words often applied to it in the Upanishads and justifying to that extent, yet passing beyond the Sankhya was an idea that had fallen from its pride of place. The one supreme Brahman as the one Ishvara Purusha Deva. This was an idea that had fallen from its pride of place. Do you understand this now? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना. नास्तिकता क्यों होती है, ये निर्गुण निराकार को क्यों टेंडेंसी होती है हाईएस्ट मानने की. All these corrections necessary for the mind are made in these words by Sri Aurobindo.
what does this mean? Pride, fallen from its pride of place? वही कि वो जो fallen from its pride of place माने कि it is the highest concept that of the पुरुषोत्तम वगैरह, बट उपनिषद के काल में और वो ब्रह्मवाद की वजह से this got मतलब it got पतन हाँ it got subordinated to the idea of the immutable Brahman. मतलब अक्षर पुरुष को उत्तम पुरुष से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए. क्लियर? ओके चलो we'll close with silence then. अनमोल, हाँ one thing, हाँ बोलो. ये जो there is that जो हम नहाने के टाइम बोलते हैं ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, is it जलेस्मिन और जले अस्मिन? सरिता इफ यू विल से जलेस्मिन तो वो संधि टूटेगा नहीं, बट इफ यू वांट टू से टू योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो हिंदी का वर्ड है ना इसमें, जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, मैं वही समझा रहा था कि हिंदी का जो वर्ड है इसमें, वो अस्मिन का थोड़ा सा रूप उसका बदला है, तो यू कुड से जले अस्मिन सन्निधिम कुरु. जले अस्मिन. इट डिपेंड्स ऑन यू बेसिकली, इट्स फॉर योर पर्सनल यूज ना. हाँ व्हेन यू विल से जले अस्मिन, हाँ. तो आप कह रही हैं इस जल में सन्निधि करो. बट अच्छा. आप जब जले स्मिन बोलेंगी तो आपको अपने आप को मेंटली रिमाइंड करना पड़ेगा कि इट इज नॉट स्मिन, इट इज अस्मिन. वो जब लिखते हैं श्लोक तो ऐसे लिखा जाता है, आप उसको कैसे रिपीट करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए वो आप पे डिपेंड करता है. अच्छा, बट बोथ आर करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. सी इट्स लाइक इफ यू से इन इंग्लिश आई डोंट और आई डू नॉट. ओके ओके. गॉट इट नाउ? इसको एलिजन बोलते हैं, ELISION. दिस इज कॉल्ड एलिजन. ओके ओके ओके. साइलेंस फॉर 1 minute.